आपसे करना चाहूंगी प्लीज। जब हमने पहली बार सीक्रेट्स ऑफ सिनौली को देखा तो देयर वाज अ वाव फैक्टर कि हमें ये कैसे नहीं पता था, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर में भी वो वाव फैक्टर कि हमें ये कैसे नहीं पता था, ये वाली फीलिंग फिर से आने वाली है। First of all, thank you for turning up in this number. और आपके सवाल का जवाब ये है that that's the part of responsibility that we enjoy, that हम ऐसी कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जिसमें कुछ नया हो कहने को. And I believe that Raghav and the entire team has been successful in achieving that. Yeah. Absolutely. और राघव आपसे यही सवाल था that having मनोज जी as the सूत्रधार, किस तरह से elevation आती है स्टोरी में? वो आपको आप आई थिंक ट्रेलर देख के आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार की एलिवेशन आ गई है. मतलब इट्स देयर इज नो वर्ड्स टू पुट इट टुगेदर. और ये एसोसिएशन दूसरी बार हुई है तो उसके बारे में क्या हमें बताना चाहेंगे? एक्चुअली पहली बार के बाद ही पता था सर को ही आगे टेक ओवर करना है. सो उसमें देयर वाज नो कंफ्यूजन इन दैट एक्चुअली. एब्सोल्युटली. और मनोज जी, आई थिंक ये पूछना तो एकदम गलत होगा कि क्या तैयारी की आपने, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी, पर ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के साथ दूसरी बार नया अध्याय लेकर आए हैं. किस तरह रहा सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर का सफर? सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें थोड़ा एक्टिंग के जो यूजुअल जो हमारे मशक्क़त होती है वो नहीं करना होता, तो एक तरीके का ब्रेक होता है. एंड आई ट्राई टू जस्ट गो अहेड एंड एंजॉय माई सेल्फ. मैं और नीरज हम लोग पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर राघव कुछ आकर के अपनी टिप्पणियाँ देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके it's a taxing process. I mean, when you are shooting, it's taxing. And sometime आपको लगता है कि यार सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. कितनी बार राघव जो है कुछ एक अलग ढंग से चीज़ों को कराना चाहता है, मैं किसी और ढंग से करना चाहता हूँ, तो कई बार वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि nobody knows what's right and still you are trying to reach to an understanding. And this is that's the part of the creative process I enjoy the most. But I think at the end of the day, if people are liking it, if it is somewhere taking it in the right direction, then I'm happy. But having said that, I must tell you that the biggest advantage of anchoring these or narrating these shows is your own education about the subject that you are narrating. That is the part which is much more fascinating and interesting for me, because I am a graduate in history, but still these are the subjects. Sinoli is a news that I've read long back, but never कभी गया ही नहीं उतने गहरे में इन लोगों ने. और रिसर्च जब लोग करते हैं तो ज़्यादा गहरे में जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा बातें पता चलती हैं. वैसे ही कोहिनूर हमारे अपब्रिंगिंग का पार्ट रहा है. ये कहानियाँ, कुछ तथ्य, कुछ फोकलोर, कई तरीके से कोहिनूर के बारे में बातचीत होती रही है. और लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने कोहिनूर की पूरी जर्नी को इस डॉक्यूमेंट्री में डाला है, वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है. एंड दैट एक्चुअली instigates an actor, pushes an actor to explore more ways to narrate it and experiment with it. Thank you. That's such a beautiful answer. कि ये जो fascination है उन्होंने feel की है और उनके जरिए और creative process के जरिए हम सब feel करने वाले हैं. The house is now open for any questions from the press. If you could please raise your hand, the mic will be brought to you. Any questions? कि मैं ही सवाल और पूछूं? There we go. Please sir, introduce yourself. नीरज जी, इंद्रवन पन्नू. सर, इतिहासकार अपने नज़रिए से इतिहास लिखता है, वो अपने नज़रिए से इतिहास को रिकॉर्ड करता है. तो यहाँ पे आपको किस तरह का जो है तटस्थ रहने के लिए किस तरह का होमवर्क करना पड़ा? एक रिसर्च टीम इन्वॉल्व होती है. जब हमारा एसोसिएशन डिस्कवरी प्लस आई, इनके साथ जब हम लोगों ने ये जर्नी शुरू की, तो हमारे सामने ये एक बड़ा चैलेंज था कि हम इन कहानियों को कितना इंटरेस्टिंग तरीके से जो है ऑडियंस के सामने रखें, उनके समक्ष रखें. और एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट ज़्यादातर एकेडमिक होता है, उसका टोन जो है वो हो सकता है दैट इट गेट्स इनटू अ वेरी repetitive mode where you don't get that sense of thrill that you enjoy in a fiction story.
तो part of the process that we got involved in was to choose the kind of stories which would inherently have that element, जो audiences relate कर पाएं, जो उनके लिए thrilling लगे, जो उनके लिए interesting लगे, academic तो हो ही, but साथ साथ entertaining भी हो. So that's how we approach these stories, and that's how we pick up our stories. After that, there is a research team that involved. Sonali जो थी वो that was one episode. कोहिनूर के टाइम पे मुझे इनको रोकना पड़ा, नहीं तो ये लोग 3 एपिसोड बना डालते थे. We started off as a 1 episode, but they kept on researching, और एक point पर आकर I literally had to step in and ask them to take it easy. And still, the story was so big, so huge in terms of scope and scale, that we ended up making we just didn't want to settle at 45 minutes. We wanted to make a 2-episoder, and that's when, again, we had a chat with Sai, Discovery Plus team, and they were more than excited that, okay, we are choosing to take that story into 2 episodes. And yeah, that's how we ended up here. थैंक यू. मनोज जी, इससे पहले कोहिनूर के बारे में आप कितना कुछ जानते थे? और देखिए, कोहिनूर के बारे में हम उतना ही जानते थे जितना कि एक आदमी जो किसी सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत जिसको इंटरेस्ट रहता है, उतना ही मैं जानता था. कभी स्पेसिफिकली कोहिनूर की हिस्ट्री को लेकर के मैंने ज़्यादा उस पर काम नहीं किया था, ना मैंने पढ़ा था उस तरीके उतने डीपली जा करके. लेकिन यही है, एक एंकर का और नरेटर या एक्टर का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर जिस सब्जेक्ट पे आप काम करते हो उसमें रिसर्च मटेरियल बहुत मिलता है. और ख़ास करके जब इस तरह के डॉक्यू ड्रामा में आप इन्वॉल्व होते हैं तो एक टीम होती है जो रिसर्च कर चुकी होती है और पूरी मटेरियल आपके हाथ में आती है, और आपका काम होता है उसको कुछ एक बार पढ़ लेना. और कुछ एक जब बार पढ़ते हैं तो न सिर्फ आपको परफॉर्मेंस के लिए आइडिया मिलता है बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ता है. तो पहली बार मुझे बहुत सारे कोहिनूर के पड़ाव के बारे में पता चला जो मुझे नहीं पता था. इसके नाम को लेकर के कि इसका नाम का मतलब क्या है और कैसे उसका नाम, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है. तो इतने अंदर तक जा कर के रिसर्च टीम काम करती है और इन लोगों ने किया है. और हमारे लिए, हम एक्टर्स के लिए जो नरेशन का काम करते हैं, ये हमारे लिए 2 तरफा जो है बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है. एक तो आपका ज्ञान बढ़ता है और दूसरा आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको इसको करना कैसे है. एक तो सिंपल नरेशन है, दूसरा है कि चूँकि कोहिनूर अपने आप में बड़ा, उसकी जर्नी बड़ी ड्रामेटिक रही है, तो उसमें कितना हम ड्रामा का पुट डालें, कितना नाटकीय बनाएं. और तो ये सारी चीज़ें इतनी फैसिनेटिंग होती है, इतना प्रोसेस इसका, और इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है. वो नरेशन में, पोइट्री पढ़ने में और नरेट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. मुझे बचपन से बहुत मज़ा आता रहा है. तो इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी बिकॉज आई एम ड्रॉन टुवर्ड्स दिस जॉब बहुत ही नेचुरली. तो अलग अलग तरीके के खेल करते रहते हैं हम लोग खेलते रहते हैं. यू नो, समटाइम डायरेक्टर्स जस्ट पुट अ फुल स्टॉप टू आवर गेम, एंड समटाइम दे अप्रिशिएट, दैट्स द जॉब. Manoj, what is the secret of the Manoj and Neeraj ki jodi? Because we are very light on our shoulder. Our head is very light on our shoulder. We don't think that we are doing any favor to anyone by doing our job. We just simply enjoy it. We enjoy each other's company. I definitely enjoy being directed by him. I mean, but off the camera, our life is far more colorful. I'll just say copy that. No, you have to say something, Neeraj. You're such a good speaker. Thank you. But yeah, part of the thing that he just said, I mean, fairly easy to work with and not having that burden of, you know, your skill set and, you know, suffering from any false notion about it. That's the key, I believe. Work is easy. It doesn't seem like work. That's the reason we end up collaborating more often, and hopefully many more to come. गुड, आपने अच्छा किया, कम से कह दिया इन्होंने, many more to come. नहीं, मैं उसके साथ एक आपको ये एक्टर भी बता दूं, एक एक्टर को काम मिलने की आशा जो है बन गई. मैं इसके साथ आपको ये भी बता दूं, जैसे हम लोग जब सीक्रेट्स कर रहे थे, तो
part of the reason that I really like him is because when Raghav narrated him, the concept of secrets and कि हम लोग सनौली कर रहे हैं, discovery के लिए कर रहे हैं, and he read it, then he asked me कि, am I going to get paid for this also? He couldn't believe that he was getting paid for this. So things like that keep it. Now keeps I'm this- ambitious that I'll be paid more in the next one. yeah, Sai sitting. but it's great fun. It's great fun. Yeah. Yeah, you know, while anchoring the show, Manoj, what was the most fascinating aspect that must have attracted you, you know? And as you said, आप history के student थे, पर आप ये मानते हैं कि history, geography बड़ी बेवफा, रात को रटी, दिन को सफा? मेरे लिए तो वैसे एजुकेशन ही तेरा दिन में सफा हो जाता था और रात को जो है रात को बेवफा की तरह आके सताता था। मतलब एजुकेशन पूरा जो स्कूल से लेके कॉलेज तक मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम रहा है और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कैसे ये एजुकेशन ख़त्म हो तो मैं एक्टिंग कर पाऊँ पूरे तरीके से, हिस्ट्री नहीं। लेकिन हिस्ट्री के साथ एक अच्छी बात यह है कि राघव ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उसमें से डेट निकाल दीजिए तो ये सिर्फ कहानी है, कहानी की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब मेरा काम वही होता है कि मैं जब नरेट कर रहा होता हूँ तो डेट जो है उसको ब्लर करता हूँ और एक फैसिनेटिंग स्टोरी की तरह से उसको नरेट करने में जो मज़ा आता है और हर सब्जेक्ट अपना तरीका बताता है कि उसको कैसे नरेट किया जाए। जैसे सनौली जो था बिल्कुल अलग ढंग से इन लोगों ने अप्रोच किया था। ये एक्सकेवेशन है, वहाँ खुदाई चल रही है, वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। तो और यहाँ पे कोहिनूर जो आपके हमारे इतिहास का हिस्सा रहा है, इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है, एक ग्लैमर जुड़ा है, एक इंट्रीग जुड़ा हुआ है, रहस्य जुड़ा है, तो उसको नरेट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो वो तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सारा क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा होता है, which I find quite interesting and fascinating. Beautifully explained. Any more questions? Yeah. Please. Hello everyone, this is Akash Bhatnagar from Bollywood Bubble. Firstly, a big congratulations and a big thank you for bringing this story to us. My question is for Raghav. It's a little in relation to what Sir had asked previously. When we talk about history, when it comes to history like this, Kohinoor, there are rarely any prime witnesses who have lived that era present today. But everything is based on the written material or the things that we have been left behind with. But at times when it comes to that, there are a lot of opposing views or opposing stories you could find. So did that happen in your case when you were researching about it, and how did you kind of tackle that and then bring it to vision through your lens? So I think that was one of the biggest challenges जो कोहिनूर की कहानी को लेके हमारे सामने आए थे कि so history को अगर समझा जाए, history is versions basically. तो अलग अलग इंसान उसको अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट करता है। अगर एक किंग उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है तो उसके जो नोबल्स रहते हैं कोर्ट में, वो उनको बड़ा रख के उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो वैसे वैसे करके अलग अलग वर्जन्स रहते हैं। तो while we were researching on Kohinoor also, so we were bumping into a lot of चीज़ें जैसे जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में मिलती है, कुछ हमें टेल्स में मिलती है, कुछ रूमर्स मिलते हैं। So basis that, then those are tough decisions that we take कि this is our version of the Kohinoor. This is हो सकता है कि एक अलग वर्जन हो सकता है आप इसमें और चीज़ें जोड़ सकते हो और चीज़ें ऐड कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि 1000 साल के इतिहास को हमको 90 मिनट में कहना है, तो then we take the portions जो हमको excite करते हैं, and as a team when we say have about 100 points, so then we bring it up to Neeraj sir, उनके साथ discuss करते हैं, and then we kind of find out okay this is the versions we want to go with. कहानी आने के बाद भी आपको मिलेंगे कि कुछ और चीज़ें इसमें ऐड हो सकती है, but yeah, from our side this is the best version that we wanted to tell. Neeraj sir, I wanted to So Neeraj sir, I wanted to ask you that when you present a true story on the celluloid, you still have to fictionalize it. Here you are presenting kind of a true story as much as we know by the history. What are the challenges of presenting it here? Because on the big screen you can fictionalize it to a certain extent. Here it's a docu-series kind of, so you have to be true to that fact as well. So what are the biggest challenges that you face while doing that? So the format allows you
number one, the docu-series format allows you not to get swayed or not to indulge in a story and make it fictionalize or customize it anyway for the larger audience. People who are watching a documentary come in with the notion that they're going to see a perspective which is very true to the origin of that story. So, as you said, I mean, the docu-series format allows you to create something for an audience which is ready to perceive and accept it in that manner. The choice of the story for us, again, like Kohinoor, is more or less a metaphor for anything that is priceless, right? And in this case, we believe that right from the origin, the time when the Kohinoor was found, when it was not even named Kohinoor, the journey from that point of time till present day when it resides in the Tower of London, it's the most fascinating story. It's stranger than any piece of fiction that you would have ever read. That it's got so much of drama that I can assure you, you'll not be able to put or script a 2-hour film with that kind of drama as this story inherently holds. So just piecing those true incidents and the chronicling that journey of this priceless diamond, and Raghav has done a fabulous job in taking us, navigating us through that particular journey. And Manoj sir, no question, just wanted to say that the voice you have, I don't think there could have been a better narrator, a better sutradhar for this story. Oh my, thank you very Thank much. you so much. We have another question. Hello, hi. My question is to Mr. Neeraj. Neeraj, sir, the title itself says the secret of the Kohinoor. So it is an open secret, as even you know that. So what difference we'll see in this series? No, I can assure you, you don't even know half of it, of what this series or the 2 episodes. You would know that yes, it is in London. You would know that yes, it is something that belongs to India. But barring that, you won't know so many things. And the journey that this diamond has had, the conflict that came because of it, and the amount of blood shed that has happened in history, the amount of drama that has happened in its journey. I mean, I can assure you, you won't have seen that or read about that. But sir, again, it's a written story, written secret. So have you been there because you're making a series on it? Sorry, I didn't get you quite, please. So it's as you told that it's a history, okay? So what will even the people will see that's secret, what nobody has seen. So what are those things like? See, the point is that एक ही डायमंड के बारे में आपके जो sources हैं वो बहुत सारी जगह हैं. Never has it been put together in one place. Okay, there are historians who have spoken about it, written about it at a particular time in history. But the journey that this diamond has had, be it in the Babarnama or Shah Jahanama, or in various different points of time, that has not been put together and chronicled as one single journey. That has been the endeavor of Raghav over here, to chronicle that journey right from the start till present day. That, I believe, is the USP of the series. Please. Yeah. Hi, this is Nawaz Kochra from Team Miss Malini. And first of all, congratulations. Secrets of Kohinoor looks amazing. And, you know, there is so much more we are looking into to know the facts and the history about this precious diamond. But I had a question from Sai. So, Sai, I wanted to know that, you know, what is the plan next for the Secrets franchise? After Kohinoor, what is the other story that probably, you know, we get to know? So yeah, we, like I said before, we do want to build Secrets as a franchise, and this is part of a larger strategy for us to build history programming in India, go deep into India and find these fantastic stories which are just buried and have not been brought to public eye and are also not been told in the way that it's, needing to be told today, which is sort of, I'll come to your answer, but essentially I just want you to know a little bit on the background, is mixing cinematic techniques and factual techniques and sort of presenting it to the world at large is something that we're trying to do now more and more with a lot of our docs and series across genres, but especially with the history. And like that other gentleman said, it's a bit contentious, right? There are different versions, sources, it's been documented. And in India also, it's not been very well documented.
not just about Kohinoor, but just generally about historical topics. It's a little gray. And the factual storytelling format allows us to move in these spaces and bring opposing points of view, different points of view. And also at Discovery, Warner Brothers Discovery, we have to double check, triple check a lot of these facts and things that have been presented. We verify also on top of what Raghav and team and they bring to the table. So it's an exciting experience to build this from scratch, and I believe we're doing some pioneering work in the history category at least, and we want to do more. We have he's very keenly listening to you, but we have more secrets lined up. I can't reveal. It'll be a secret for now, but we do have a shortlist already, and we're already in early pre-production right now. I can't unfortunately reveal what the title is, but we certainly want to build this as a long-term strategy. Yeah. So some secrets still remain, yeah. So that we see you all very soon again. But ladies and gentlemen, thank you so very much for being with us here today. A big round of applause once again for our the team behind Neeraj Pandey's Secrets of the Kohinoor. Raghav Jairat, Neeraj Pandey, Manoj Bajpayee, and Sai Abhishek. And of course, there's lunch being served outside. Thank you once again for joining in today. Thank you.